Okay. So the question which I gave you, Port Adelaide, outer harbour. What was the answer you all got? 1.061. 1.061. Yeah, 1.0. 1.061. Yep, correct. 1.061. How much time did you take to do the question? 9:30. Hmm? 9:30 LMT. Almost the same, sir. How much time are you taking to solve the question? Around 30, sir. अभी भी 30 है. 25 minutes. About 25. Okay. 25. जो 30 पे अभी भी है, you need to keep practicing to bring it down. जो 25 पे है, you need to bring it to 20. That's how your target is going to move. Now, basically. And that question on Bhavnagar, what was the answer you got for Bhavnagar? 4.762. 4.762. ठीक है, that's fine. 63, 62 is okay. 61 is also okay. All right. So basically, you've got a gist of the procedure to follow and this thing. So now I'll take you to another type of a question, another variation which can come in. So try to understand the variations, how the exam can play around with. So in the first day we found out that the height of tide at Tianjin was 2.606 meters on 11th April 1992 at 11:24 hours. Correct? We found this out. Now listen to the question. The question says, your vessel runs aground. Okay? Your vessel runs aground at Tianjin on 11th April at this time. Your vessel has run aground. Find the earliest time she will refloat. Find the earliest time she will refloat on the same day. Okay? Find the earliest time she will refloat. Now, the question is, when she refloats, what will be her height of tide? So basically, we always run aground on a falling tide. Okay? We always run aground on a falling tide. We never run aground on a rising tide. So since we run aground on a falling tide, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जब यहाँ पे मैं रन अग्राउंड किया फॉलिंग टाइड पे 2.606 था,
2.606। जब राइज फिर से करेगा और फिर जब 2.606 होगा on the next rise tide, I will then float free. Agreed? Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Question is, when is this going to happen? That's the question. कब ये दोबारा होगा, मुझे ये जानना है। 24 आवर्स के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया सेकंड मेट वाला। अब सेकंड मेट का क्वेश्चन बन गया ये, जो सेकंड मेट का पैटर्न है। तो लेट अस गेट इनटू त्यांजिन फर्स्ट। त्यांजिन कौन सी वॉल्यूम में था? वॉल्यूम 3 में था। वॉल्यूम 3 में था। वॉल्यूम 3। तो अभी वॉल्यूम 3 खोलो और त्यांजिन इज अ स्टैंडर्ड 186 पेज नंबर। तो त्यांजिन में चले जाओ, त्यांजिन जिंगगैंग पे आ जाओ। आई एम नाउ ऑन पेज नंबर 186। 186 पे आ जाओ। 11 अप्रैल पे आ जाओ। ठीक है, 11 अप्रैल पे मेरे टाइड के जो टाइमिंग्स हैं मैं वो लिख 0827 1557 2226 एंड मेरा लो वाटर है 1.9, मेरा हाई वाटर है 3.5, फिर 0.8, फिर 3.4। ओके, नाउ मैं जो रन अग्राउंड किया हूं मैं 11:24 पे किया हूं, यानी कि इन दोनों के बीच में ये मेरा फॉलिंग टाइड था। तो तब मैं रन अग्राउंड कर गया। अब मैं राइज कब करूं, मैं फ्लोट फ्री कब करूंगा? जब मेरा ये टाइड आएगा, ये मेरा राइजिंग टाइड है, यानी कि आई विल फ्लोट फ्री somewhere between these two fellows. Do you agree on this? Oh, yes, sir. And जब मेरा इन दोनों के बीच में टाइड 2.606 पार करेगा तो मैं फ्लोट फ्री कर जाऊंगा। तो इन दोनों का मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइड 16 minus 7 9 11 6 hours 29 minutes 6 hours 29 minutes। देख लो जरा, गलती तो नहीं करी है? 16 minus 7 नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। 7 minus 5 2, ठीक है। ओके, सो मेरी ड्यूरेशन ऑफ टाइड 6 hours and 29 minutes है। ये मेरी ड्यूरेशन ऑफ टाइड है। अब चलो ग्राफ पे। अब वॉल्यूम 3 के बिगनिंग पे ग्राफ पे आ जाओ। वॉल्यूम 3 के बिगनिंग पे ग्राफ पे आ जाओ। तो मेरे पास ये मेरे 3 ग्राफ हैं। ये मेरे 3 ग्राफ है। ये है 7 hours बिफोर, 6 hours बिफोर एंड ये है 5 hours बिफोर। एग्रीड? ठीक है। नीचे में यहाँ पे मेरा लो वाटर स्केल है।
यहाँ पे मेरा हाई वाटर स्केल है, ठीक है। लो वाटर में मेरा लो वाटर का जो हाइट ऑफ टाइड है वो 0.8 है, तो गो टू 0.8 ऑन द लो वाटर स्केल, चले जाओ 0.8 पे। मेरा हाई वाटर का टाइड 3.4 है, इधर में चले जाओ 3.4 पे, ये मेरा हाई वाटर का है। दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मेरे को जो टाइड चाहिए वो चाहिए 2.606, so I go for 2.606 on the high water scale and I drop a perpendicular down. Okay, जहां पे ये इसको काटेगा, इस लाइन को, now I go horizontally like this. Okay, ये 6 आवर्स है, ये 7 आवर्स है, मेरे को चाहिए 6.5, तो आई विल गो इन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन के बीच में जाऊंगा, इन दोनों के मध्यांतर पे। ये 6 है, ये 7 है, ये 6.5 हो गया। एंड इस पॉइंट से मैं नीचे जाऊंगा और एक्स एक्सिस पे जहां पे ये काटेगा उसको मैं रीड ऑफ करूंगा। तो अब आप वो रीड ऑफ करो और मुझे बताओ आपकी क्या वैल्यू आती है। -2 hour 10 minute. माइनस 5. ये अब आपको इसमें एक्यूरेट होना पड़ेगा, इसमें यू विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल एंड स्लो। 2 hours 22 minutes. हाँ, मेरा भी उतना ही कुछ आ रहा था, ये जरा 2 आवर्स मेरा भी उतना ही आ रहा था। 22 minutes, 2 hours. 20 minutes, 22 minutes is the same, no difference. I was getting 2 hours 20, 22, मतलब ऐसी। Just check others. Yes sir, same. यार मेरा ये 22-25 के बीच में आ रहा है सर। Done. That's Done. okay. Is everybody getting the same answer? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि I am so many hours and so many minutes before the high water time. So 22:26 minus 2 hours, whatever you're getting, so many minutes, minus कर दो। 6 minus 2, 4. 2 minus 2, 0. 20:04 hours. Yes sir. Right? That means at 20:04 hours, the height of tide will be 2.606 on the same date in the next tide. So she will be ready to float free. सर ये टाइम 1557 से भी कैलकुलेट हो सकता था। नहीं कोई उस नहीं, ये हाई वाटर से होता है, इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर, बिकॉज राइजिंग टाइड है ना, ठीक है सर। तो इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर।
So rising tide interval from high water is taken. So many hours before high water. So many, matlab, the interval is before high water. Is this okay? सर अगर फॉलिंग का होता है तो नीचे से लाइन लेते हैं. हाँ, वो फॉलिंग में हम लेते नहीं है, तो उसको भूल जाओ. जो चीज करते ही नहीं है क्यों उसको सोचे. ओके सर. So is this okay? सर चार्ट के राइट साइड में हम कभी जाते हैं, ग्राफ के राइट साइड में? नहीं, ओके. फॉलिंग टाइड के लिए है. मैं तो राइजिंग टाइड की बातें कर रहा हूँ. So that way, वो फॉलिंग टाइड है. मैं राइजिंग टाइड पे ही रहूंगा हमेशा. जब भी मुझे फ्लोट करना होगा मैं फ्लोट भी उसी पे करूंगा, सब कुछ वही करूंगा, तो इसलिए मैं उसी पे देखूंगा. So I will float immediately after this. मतलब at 20:04 I am ready to float. So any time after 20:04 I am ready, I will float. Is that okay? सर फॉलिंग का क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, जैसे वो ग्राफ में नीचे +1 +2 +3 लिखा हुआ है. नहीं. ओके सर. So this question now has become a question, a combination of harmonic and second mates. Generally ऐसा नहीं आएगा, but ये as an exception to the rule मैं करा रहा हूँ. Generally आपका, because आपको पहले 2.606 उस लंबे वाले तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कहानी करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन becomes very lengthy. तो वो मतलब जायज नहीं है, मतलब you will not be able to complete the time. So that's the reason why it's not given. However, just connecting the dots so that in case you see some question like this, you should be able to comprehend. अच्छा, अभी वापस मैं त्यानजिन के पेज पे आ रहा हूं. आई एम ऑन पेज नंबर 186. आई एम ऑन पेज नंबर 186. अब अच्छा, अब supposing same Tianjin question, okay, and your vessel had run aground on 6th of April, okay, and your vessel had run aground in the PM hours on 6th April. Your vessel had run aground in the PM hours, right? अच्छा, 6th April की कहानी क्या है? PM में हाई वाटर टाइम क्या है? 3.9. 1745. 1745, 1745. right? And low water time क्या है? वो 7th 1200. 1200. उधर चला गया, 1200. तारीख बदल गई. ठीक है. Now supposing she had run aground at Tianjin, let's say at 2000 hours. Okay, सर डेट सर 6th April. Runs aground
on 6th April at Tianjin at 2000 hours. ठीक है, height of tide you found out, let us say 2.6 not 6. अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? Find the earliest time she will refloat on the following day. अब ये following day का क्या मतलब हो गया? मतलब डेट बदल गई. The earliest time she will refloat on the following day would be 7th of April. So we are now talking about 7th April AM hours. Okay? Is that okay? So you will now have to be very careful. You will have to be between these two timings. Now you are talking about midnight 12 बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक, उसकी बात कर रहे हो. Find the earliest time she will refloat on the following day. ठीक है. अच्छा, सो ये AM आवर्स है. ये बात हो रही है 000 आवर्स टू लेट अस से 0600 आवर्स. सुबह मॉर्निंग के उन दोनों के बीच में जो भी आएगा टाइम, ये उसकी बात हो रही है. कभी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, कभी बोलेगा फाइंड द लेटेस्ट टाइम शी विल refloat on the same day. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है we are talking about 6th April only, supposing, या whatever be the date, and we are talking about 1800 hours to 2359. ये बात हो रही है. तो लेटेस्ट टाइम मतलब ये इस दौरान में जो भी टाइम होगा. अर्लीस्ट टाइम द फॉलोइंग डे मतलब मॉर्निंग में डेट चेंज हो रही है, और उसके बाद में 0600 आवर्स से पहले जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है. Have you understood the difference between these two? Yes sir. Following day and ये sir same day लिखा हुआ है. That Correct. is the wording. So one is that, the other is latest time, earliest time. ठीक है सर. मतलब अर्लीस्ट टाइम फॉलोइंग डे मतलब सुबह की बातें कर रहा है, 6 बजे से पहले, मिडनाइट से 0000 से लेके 06 की बात करता है. और लेटेस्ट टाइम बोलता है तो 1800 टू 2359 की बातें कर रहा है, मतलब उसी तारीख को बोल रहा है. तो तारीख की अहमियत है बेसिकली. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वही सर, as early as possible वो refloat हो जाएगा same day. बेसिकली That is he's talking about. बेसिकली Sir, but 6th April को this latest time, that is the evening PM hours, so actually the tide is falling, sir. So the refloat actually होगा. सो इस क्वेश्चन में इस तारीख में तियानजिन का नहीं हो सकता. Okay sir. तो just नहीं example हो दिया. सकता. मैं खाली एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो 6 अप्रैल का नहीं हो सकता, किसी और डेट का होगा, वो मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा सर, समझ गए सर. हाँ, वो किसी और डेट का होगा. मैं वो होगा फॉर एग्जांपल 13th of April. देखो हाँ सर, समझ गए. ठीक है सर. हैव यू अंडरस्टूड? वो 13th अप्रैल को होगा क्योंकि 1830 पे लो वाटर टाइम है. अब उसके बाद राइज करेगा. ओके, और 0100 तक जाएगा नेक्स्ट डेट 14th अप्रैल को. उसके दौरान में कब 2.606 होगा 13 तारीख को, वो चेक करना जरूरी है. Is that okay? पर सर जो Yes. हाई वाटर टाइम देंगे that will be for 14th only, right? See, what I'm trying to tell is see the difference between 6th and 13th of April.
6 अप्रैल को देखो, शाम को 5:45 पे आपका हाई वाटर हो रहा है, उसके बाद मिडनाइट तक लो वाटर चल रहा है आपका, करेक्ट? So that means it's a falling tide in the PM hours, मतलब इवनिंग आवर्स के बाद। और 13th को 18:30 पे आपका लो वाटर टाइम है, उसके बाद फिर राइज कर रहा है। तो जब आप फ्लोट करोगे तो आप 13 अप्रैल को शाम को फ्लोट करोगे। दैट वुड बी दी अर्लीस्ट टाइम शी विल फ्लोट ऑन द सेम डे, नॉट ऑन द फॉलोइंग डे, सेम डे। So that is the latest time she will refloat on the same day. ये वाला है, ये 13th अप्रैल होगा। And the earliest time she will float on the following day will be on 7th April morning. This is the difference that I am talking about. Is this difference okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. बस ये समझाना चाहता था मैं, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, वो प्रैक्टिस एट होम। फाइंड द HOT at Woods Hole. At Woods Hole. On 10th March 1992 at 17:30 hours. Woods Hole is ATT number 2790. Woods Hole is ATT number 2790 on 10th March 1992 at 17:30 hours. Again, time yourself and see how much time do you take to do this question. Okay. Okay. Little bit of theory. Little bit of theory. The causes of tide basically are several. Supposing this is the earth, okay, and the earth is rotating around its own axis.
And then you have the position of the heavenly bodies also. So you've got, let us say, the sun. Of course, sun is much bigger. The size doesn't matter. And you've got the moon, which is far smaller. So, and on top of the earth, you've got the water. So there is water on the earth. The water is a separate part, not attached to the earth, but is placed on top of the earth. And this earth is rotating around its axis. And simultaneously, the earth is also revolving around the sun, along with the other planets. So because of that, because of the presence of the sun and the moon relative to the earth, the water mass will get attracted towards the heavenly bodies. So as a result, the water is going to get attracted, and the water will form a bulge. The water will form a bulge towards the heavenly body. This bulge is due to the geographical attraction. So this bulge will cause a certain high water at this place, and consequently a certain low water away from the high water, and then another high water here, and then another low water. Now, the relative positions are not going to remain the same. The relative position is going to change. So at some point in time, you will have this heavenly body here. So consequently, the bulge will travel over here. So what was originally a high water here would be a different high water here, and so on and so forth. So different latitudes would have different high water timings and low water timings, consequently. So it is latitude dependent. Just as the heavenly body is also going to be changing. So the heavenly body's amplitude and the declination will determine the position of the heavenly body. And consequently, the latitude of the ship on the earth, wherever she is, will determine the high water or the low water time at that point in time, at that position. So this becomes, and therefore it will keep changing, the high water and the low water time on earth. Simultaneously, so this is one cause of the tide. Simultaneously, you would also have some earth masses on, there would be continental land masses on the earth. So you have the continental land masses. Now, and then you have the water body also. So when the earth is rotating, this continental land mass is going to push the water body, because when the earth is rotating, the water body would be detached from the earth and would be lagging behind.
So the water body, so when the Earth is rotating, the water body which is lagging behind the land mass which is coming from behind will tend to push this water mass forward. And as a result of that, the water level will rise at that location. And you will have Yes, sir. a certain height of tide at that location where the earth mass will push that water. So, depending on the contour on the earth also matters the height of tide. So, that's also another factor. And similarly, we've seen that shallow water effects, the depth of the water down below, the sea, how much is the continental land mass going? That will also determine that will have an effect on the tide of that location. So, what I'm trying to say is all these are the various factors which go into the causing of a tide at a certain location on Earth. There are so many of them, so many causes of them. And so, therefore, all of them need to be checked up and calculated. So, these tide tables are done by the IHO, the Hydrographic Office. So, the Admiralty Hydrographic Office is in UK, London. The Indian Hydrographic Office is in Dehradun. And they handle all the calculations of tides around the Indian coast and at the Indian ports. They have their own methods of determining tide, predicting tide. They have their methodologies by which they calculate the tide and predict the tide. The challenge for them, of course, is when a new port is made and discovered and found. Then calculation of the tide at that port, new port, that is a challenge for them. Okay. Now, what I want you to do is, I want you to revise your second mate's ka tide calculation. Okay. So, do you all have Captain Puri's book with you? Chart work for mariners. कैप्टन पुरीज की किताब है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो कैप्टन पुरी की जो चार्टवर्क की किताब है ना, फॉर सम रीजन मुझे वो किताब बड़ी अच्छी लगती है. उस किताब में एक चीज तो मुझे, क्योंकि उसमें कैप्टन पुरी हैज डन एक तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो बड़ी पसंद है. ओके. और दूसरी ये कि वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं. तो कैप्टन पुरी की जो चार्ट वर्क की किताब है, उसमें अगर टाइड का चैप्टर आप खोलो, तो चैप्टर 18 करके है मेरी किताब में, चैप्टर 18 है टाइड कैप्टन पुरी की. उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व्ड. ओके. तो आई डोंट वांट यू टू डू ऑल ऑफ देम. I'll give you 3 questions only to do out of that, which will take care of the basic principles of tide.
So I want you to do those 3 questions. Okay. So which ones are those which I want you to do? I'm writing on the board. So you can just do these questions as a practice so that okay. Captain SK Puri, chart work, tide. I want you to do one is this is example 4 and the name of the port is Avonmouth. Okay, 1700 hours. I want you to do this. Example 4 solved है. This is solved example है. Okay, I want you to do that. Example 4. Then I want you to do secondary port में. I want you to do exercise 17. This is Roman 17. Roman 17. I want you to do this. This is secondary port. The name of the port is Shimizu. Shimizuko, Japan. The name of the port is Shimizuko, Japan. 1900 hours. This is standard port. Secondary port, sorry. So please do Shimizuko. And the last one I want you to do, and that is question number 22, exercise 22. It is called Roman 22. And this is Bangkok bar. And this question is all about passing under a overhead cable. Overhead cable clearance. What clearance to pass under. So this is all about that. I just want you to do these 3 questions, please. Avonmouth, Shimizuko, and Bangkok bar. So please do these 3 questions. सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर कौन सा है? मिल नहीं रहा सर. अच्छा पेज नहीं पेज ये पेज जो है वेरी करेगा बिकॉज योर एडिशन माइट बी डिफरेंट. मेरी बुक में है पेज नंबर 192. उसके इर्द गिर्द होगा. कैन बी 191 इन योर बुक, कैन बी 193. इसके इर्द गिर्द होगा. एग्जाम्पल 4 221 है. हाँ जी. किसी बुक में 221 दिया है हमारे. ओके ऑलराइट. सो दिस कैन वेरी. दैट्स व्हाई मैं पेज नंबर नहीं दे रहा था. So this is Avonmouth 1700 hours. 27 March, right? This is 27th March, right? 27th March. 27th March. ठीक है? Is that okay?
So please do these 3 questions and just practice these. And I will be putting up the link in your WhatsApp group of Captain Vishnu Sharma's videos on your second mates का जितना भी है टाइम का कैलकुलेशन का वीडियो. So you can have a look at it in case you want to revise, you want to go through that. अगर आपको सेकंड वेट के रिवीजन के लिए सर बस वही देखेंगे सर, है ना? तो कैप्टन पूरी, हाँ वो वीडियोस देख लो, that is good enough. Those videos are good enough. सर चैनल का नाम क्या है? Marine Gurukul YouTube. I'll post it on your group. मैं ग्रुप में डाल दूंगा. I'll put up the links to you so that you don't have to hunt around anywhere. ठीक है? Is that fine? Yes sir. Yes sir. Okay. चलो. So so please go through that, and then tomorrow we will resume our stability. In case you can start off with, once you've done all this, एक बारी कल बात कर लेंगे, but we'll start with stability tomorrow. We'll resume that. ठीक है?